Okay, so we have to calculate the return on investment and the IRR. I think return on investment was easy. Let me first explain and then let me read your answers. So they had invested 15 four times at the beginning of year zero. I mean in the year zero, year one, two, and three. Like at the beginning of year one means year zero, one, two, three. So year zero, year one, year two, and three, they have invested 15. Okay. And from the end of the year four, five, six, seven. I'm not able to write 7 over there. Okay. They are receiving 30. So from that perspective, उन्होंने investment किया था 60 का and उन्हें मिला total 120 का. So clear था the return on investment, like ROI is like कितना invest किया और कितना मिला. So they got 120 over 60. So the return on investment was 2x. ओके, ये बाद में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया वो अलग चीज है बाय द वे. सो इफ यू एनीवन गॉट कंफ्यूज विद दिस वन कि बाकी ईयर 5, 6, 7 तो मैच हो रहा था 30, 30, 30. मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर 5, 6, 7 मैच हो रहा है लेकिन ईयर 4 का क्यों नहीं मैच हो रहा है. सो बट like year 5, 6, 7 में वॉट एवर दे आर इनफ्लोइंग मतलब वॉट एवर दे आर रिसीविंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट. बट ईयर 4 में दे आर गेटिंग 30 बट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ओनली 10. तो मे बी दे आर पुटिंग बैक 20. आई डोंट नो, वो मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड 10 क्यों है. बट एनीवेज उसका ये क्वेश्चन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था. वो ऑब्वियसली वो टीवीपीआई आरबीपीआई के लिए कनेक्शन है. सो आई वाज लाइक 2x and tend to calculate the IR. I'm going to use a CF function. CF second clear work. 15 with a negative sign, enter. C01 15 with a negative sign, enter. And you can use a frequency 3 but ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो कर दो. 15 with a negative sign, enter. 15 with a negative sign, enter. And then 30. And now I'm using a frequency as 1, 2, 3, 4. Okay, press IRR and press compute is 18.9. Okay, answer was B. ये भी कॉपी नहीं किया मैंने. Fifth should be B. कहाँ पर है? एक सेकंड रुको रुको रुको. Yeah, fifth one is B. Okay, and who was asking it out? I wanted to check the So, answers, but go on. so this question has been changed in errata. Can you please check the errata because they have now included the 10 in IRR calculation now. तो वही मेरा वही है कि ये वाला जो है ना, ये इधर 30 होना चाहिए था या फिर ये 10 होना चाहिए था. तुम्हारे पास अभी एराटा है क्या? डाउनलोड करना पड़ेगा Yes, मुझे sir, yes, अदरवाइज. sir. So as we were wondering about this 10 not matching with this 30, so Rishikesh has told us about the errata. So So the first this question, is first ये वाला. question has changed the question format, sir. First question. I mean, yes, 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 that thing. Investor contributed 15 million per year at the start of the year 1 and 4, which is correct. उसमें कोई प्रश्न नहीं, which were used for investments. ये क्लैरिफाई नहीं किया था उन्होंने. वो नीचे था वो, कि ये वाला डेटा था नीचे था, which were used for this 4 investment, which was नीचे. 4 distinct investment, which is obvious actually, because mention किया है 15 million per year. This is that they did not mention it at this over here clearly, which is fine. It's not a big mistake that they did. Okay, and this fund received 30 million from investments year 4, 6 and 10 million. अच्छा ये ऐड किया उन्होंने 30 million in the year 4, 5, 6 and 10 million in the year 7. So they changed the question. So 30 million year 4, 5, 6 and 10 million in the year 7. That changes the IRR now and the answer also then in that case. ROI will also be changing in that case. Any other errata? So, So that's the change in question, and below that the change okay, in the the options are this also changed question. now. But then how is ROI 2x now in that case then? Okay, but let's look at the IRR. Let's do it IRR. Then let's look at IRR based on this change question now. 15, 15, 15, 15, 15 is perfect. 30 will be there 3 times. And then there will be this 10. And then press IRR and press compute. Oh, 14.70 RR. एराटा पे मिस्टेक है क्या? Yes, sir, that's 16.6. why.
So what I think they wanted to Below say they are is providing this is 10. This is 10. Okay, that is what is matching. Let's check with that. CF, this is fine. And I think this was 10, they wanted to say. And frequency will be 1 for this. And then 30, which is there 3 times. Frequency I'm going to put as 3. And I think this will come as 16 point. ये नहीं आ रहा है 6. so they have changed the answer also for the fifth question. It's still be 37 page, sir. Just once again. I don't know. Yeah, me go on. Man, match too many Look, rams. 20 they have not distributed yet. That's why we are the total is coming to 100. So 30 is from the year 456, that is 90, and 10 is distributed at the year. Oh, okay, okay. Last का ये 20 वाला. Okay, 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 Ah, okay. so 20 Okay, is not. okay, okay, okay. That's perfect. That makes it perfect. So year 456 is 30, 30, 30. And in the year 4, they got 30, but they distributed 10. So that 20 has been like retained. And in the year 7, they are distributing only like the 30 and the remaining 20 is being carried on. No, year 7 में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है 10. तो year 7 का 30 में से 10 डिस्ट्रीब्यूट किया है and 20 is there. Then what about year 4? तो year 4 में भी 30 इनफ्लो आया था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हमने 10 किया था. बट एनीवेज चलेगा, मतलब मैं एराटा में जा ही नहीं रहा हूं. बट ये क्वेश्चन के लिए एराटा की कोई जरूरत ही नहीं थी. सिंपल था कि इन्वेस्टमेंट्स वर 54 या 60 एंड रिटर्न्स आई मीन दिस वाज 34 या 120. So 60 versus 120, return on investment was 2x. And IRR based on इसकी जरूरत ही नहीं, like based just on this data and based on this data, if I use that CF function and the previous one 15 and then 15 and 15 and 15 and 15 and then use 30, okay, and use frequency as 4, IRR would be coming. कैसे यार, क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं? इसके आगे का लिखा है क्या? इसकी वजह से. Okay, 18.92. But yes, possibly like I was confused with this. ये 10 क्यों, ये 30 तो मैच हो रहा है. So that's the reason. If there is a doubt, then probably even if you got the answer right for IRR, मतलब अगर तुम लोग ने C चूज किया है, you will not get the answer and you will not get the marks. But अगर तुमने A और B में से कुछ भी सिलेक्ट किया, you will get the marks because of this confusion of distributed being 10. Okay, so if there's a kind of a mistake in the question or the data is not properly given in the question, like there is a discrepancy, this was right, this was right, this was right, but I think this should have been 30. So from that perspective, if there is a because understand why will it require? Because clearly है कि investment कब किया था? 0123 में, beginning of the year 1 2 3 4 में 0123 में इन्वेस्ट किया था. तो ईयर 4 में जो 30 आ रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है फंड को. तो फंड विल डिस्ट्रीब्यूट दैट, फंड उसको रिटर्न करके करेगा क्या? सो फंड विल डिस्ट्रीब्यूट दैट. सो ये 10 नहीं हो सकता, ये 30 ही होगा. सो बेस्ड ऑन दैट अगर तुम कंफ्यूज हो गए एंड एज अ रीजन यू सिलेक्टेड मे बी एंड बी में से कुछ, देन यू विल बी गिवन अ बेनिफिट ऑफ द डाउट. But ROI 3x was not at all there. So if you selected C as answer, please give yourself 0 marks. Is it clear me than others? Rishikesh, others, is it clear? Yes, sir. तो एराटा का कुछ सेंस ही नहीं बनता. एराटा दे आर नॉट क्लैरिफाइड. ये पहला वाला ठीक है कि इट वाज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स व्हिच वर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड 30 मिलियन ईयर 4 एंड 10 मिलियन, ये लॉजिकली नहीं बन रहा है. ये एराटा में भी देयर इज लाइक नो क्लैरिटी ऑन दिस. एंड so I'm checking based on the previous one only. Okay, so based on that ROI would be 2x and IRR में भी अगर इसके वजह से अगर तुम कंफ्यूज हो गए, लेट्स सी अगर CF second clear work, CF0 15 with a negative sign, C01 15 with a negative sign and put in frequency as 3. एंड सपोज करो तुमने इसको 10 लिया है, लेट्स सी अगर ए आंसर आता है क्या, एंड देन इसको 30 विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, 12.56 आ रहा है, फिर भी ए नहीं आ रहा है आंसर इन दैट केस.
then why there should be a benefit of doubt given to you if you mark A as answer? Then I don't think so. Then even if the question is wrong, still you are not getting A as answer. So from that So, perspective, B will be given the answer. Yeah. so A would be possible if you do the if you use the formula of R is equal to 1 plus IR raised to n. हाँ बट वो तो जब जस्ट यहाँ पे 60 एक बार इन्वेस्ट किया एंड देन 120 7 साल के बाद आया तो ना, लाइक यू आर डूइंग दिस फॉर्मूला ना, Yes, sir, दैट yes, वाज sir. दैट वाज नॉट एट ऑल देयर इन दिस केस, लाइक मतलब एक दो ये तो ये फॉर्मूला अगर तुमने यूज किया मतलब इसमें कुछ लॉजिक नहीं था बिकॉज ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं था. ओके, तो दिस वाज नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सो दिस विल नॉट बी करेक्ट. बट अगेन Yes, sir. जब भी क्वेश्चन में मिस्टेक्स होता है जैसे यहाँ पे ये वाला मिस्टेक्स है व्हिच दे ट्राइड टू करेक्ट इन एराटा एंड दे कुडंट करेक्ट दैट इन द एराटा, एक्चुअली दे मेड अ मोर मिस्टेक इन द एराटा. ईयर 4 का ये क्लियर है ना सबको, ईयर 4 में अगर 30 इनफ्लो आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन शुड हैव बीन 30 बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स वर डन इन 0 1 2 3. तो ईयर 3 में 30 डिस्ट्रीब्यूशन आई मीन 30 का इनफ्लो आ रहा है तो 30 डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था. इज इट क्लियर? से यस और नो? Yes, sir. क्लियर. तो वो जो उन्होंने लिया कि ईयर 7 में ये किया, तो एक बार वापस एराटा में देखो. एराटा में उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया है कि ईयर 7 वाला केस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं उन्होंने. तो जस्ट मेंशन किया कि ईयर 7 में 10 का है. ये ईयर 7 में, ईयर 4 में 10 का है, तो इट मेक सेंस बिकॉज ईयर 4 में डिस्ट्रीब्यूशन 10 का है. तो दे मेड अ मिस्टेक इन एराटा इटसेल्फ. ओके, सो द आंसर वाज बी एंड आई गेस इट वाज इजी क्वेश्चन. लेट मी सी तुम लोगों ने कैसे लिखा है इसके आंसर्स को. सो आई एम चेकिंग ऋषिकेश आंसर. Perfect, perfect, perfect. For ROI, you have mentioned perfect. Even if you would have mentioned 120 upon 60, na, still you would have got the marks, Rishikesh. But ये perfect है. ये better than 120 upon 60 है. And IRR perfect, perfect. Everything is perfect. Okay, so you get, let's say, 3 on 3 for selecting the right answer and 2 on 2 for showing the answer. Perfect. You get 5 on 5 for this. Okay, any doubts इसमें कुछ अभी क्लियर है ना जो मिस्टेक्स था उनका? एनी डाउट इन दिस? लेट मी नो, से यस नो समथिंग. अरे कुछ डाउट है तो बोलो, या नहीं है तो वो भी, वो तो समझा. नो डाउट. ओके, गुड. ओके, परफेक्ट.